हेलो एंड वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट मु तुम समस्त को आम ओकेसीएल स्कूल लर्निंग प्लेटफॉर्म को स्वागत करुचे पिले तुम समस्ते जानिछ कि आम निर्दिष्ट भाव में इंग्राजी विषय वस्तु पर कथा होउछे दैट मीन ए जो इंग्राजी रही तबे से इंग्राजी को आम किपरि लिखिबा पई पिले समर्थ हबा दैट मीन केवल लिखिबानी ताको आम पिले भाषा माध्यम रे मध्य परिप्रकाश करबा यस और नो तेणु तुम थंबनेल टी मध्य देखि सारिछ राइट सिंपल सेंटेंस थिंक सिंपल सेंटेंस ऑलराइट जिते बेले आमे राइट आउ जो चिंता करिबा बा थिंक ए जो विषय वस्तुटी आज आमे कथा हवा पई जाउछे तबे एथिरे जो सिंपल सेंटेंस आसी छे तबे सेही सेंटेंस ही आमे कोठी ना कोठी विगत 4-5 टी क्लास रे प्रत्येक समय रे आमे पिले आलोचना करूथिले तेणु आज होउछि सेही दिन ऑलराइट ना आमे सेही केते गुडिए विषय वस्तु जहाँ सिंपल सेंटेंस लिखिबा पई पिले आवश्यक थिला ताहा तो आमे सिखिले ऑलराइट एणु मु कहि दिए ना तुम मानको सामने जहाँ भी पिले लेखा हिछि ऑलराइट तुमे देखि परिबो द आर्किटेक्चर ऑफ डिस्क्रिप्शन यस और नो तेणु आज आमे से सिंपल सेंटेंस लिखिबा पूर्वरु जहाँ आवश्यक अछि मो पिले तुम मानक मन पकई दिए डिटेल्स तो आम कथा ही ओके तेणु ए कौन अच्छी आर्किटेक्चर तबे आर्किटेक्चर मीन कौन पिले ना जदि आम किसी करने चाहूचे कि आम गोटे घर को जदि मुझे चाहूचे कि गोटे मूर्ति मुझे करने चाहूचे कि मु गोटे खेलना मुझे करने चाहूचे तेज से क्षेत्र में निर्दिष्ट भाव में से स्वतंत्र ज्ञान आवश्यक अच्छी मो घर मध्य तैयारी करि परिबी मो मूर्ति मध्य तैयारी करि परिबी मो खेलना मध्य तैयारी करि परिबी जदि मो कथा हेबी तबे स्वतंत्र भाव में किए बा ए जो तैयारी करिबा विषय वस्तु जहाँ रही तबे क्यों व्यक्तिंकर बा कहार आमे सहाय्य नौचे तेणु सेमानक पाखरे जो स्वतंत्र ज्ञान अच्छी कहीं ना जी खेलना तैयारी करे सी पिले घर तैयारी करबा हला किंबा मूर्ति तैयारी करबा हला ए विषय वस्तु प्रति कौन पिले तांको जଣା थिले मध्य स्वतंत्र भाव में सही विषय वस्तु रे तांकर पिले कौन जो ज्ञान रहिबा कथा सेतिकी मात्रा रे न थाई पारे ऑलराइट तेणु से जहाँ भी हो तबे आज जो आमे आर्किटेक्चर विषय वस्तु कथा होचे तबे सही विषय कथा होचे जो जगह रे आमे सिंपल सेंटेंस को लिखिबा पई आज कौन पिले ना मैदान मध्य को ओलै आसी छे ऑलराइट तेणु से जहाँ भी हो तबे ए जो डिस्क्रिप्शन आसिला डिस्क्रिप्शन पिले डिस्क्रिप्शन मीन किसी डिटेल्स दिया जाई छे यस और नो जेतेबेला तुमे देखिबो डिस्क्रिप्शन मीन एथिरे हम डिटेल्स विषय वस्तु कथा होउछे तबे से डिटेल्स विषय वस्तुटी कोन पिले डिटेल्स रो अर्थ मो पाखरे कोन एई गुटे कलम अछि मो पाखरे पिले स्वतंत्र भाव में तुमे देखिबो स्मार्ट बोर्ड दैट मीन तुम पाखरे मध्य मोबाइल अछि तबे से मोबाइल हैला कि एई कलम हैला ऑलराइट कि जेकोसी वस्तु तुम चतुर्पार्श्व में बर्तमान जो रही तेज से वस्तुर किसी डिटेल्स तुम जानवाई चाहूच हाँ ना नहीं यस और न पिले मो कहली डिटेल्स दैट मीन से डिटेल्स तुम जानवाई जो चाहिए निश्चित भाव में से वस्तु को ही प्रश्न कल दैट मीन जितेबाला मु कहली कलम तेबे एई कलम देखिबाई आउ हाथ लेखा कलम देखिबाई दैट मीन आम पिले जो कलम को आम खातार व्यवहार करुचे ऑलराइट तेबे ए दुईटी कलम मध्य निश्चित भाव में किसी भिन्नता रही तेबे से जो भिन्नता को बुझीबा ही आमे से निर्दिष्ट कलम विषय रे अधिक अधिक जानवाई चाहिए बा अधिक अधिक जो डिटेल्स रही बा एई कलम सह आउ जहाँ रही बा जो संपर्क रही तार ये कहीं खातार लिखी पारेनी किंतु ये पिले ए टीवी मध्य बा स्मार्ट बोर्ड मध्य ये लिखा को समर्थ हुए ऑलराइट तबे एई कथा गुडी जतबे मो मन को प्रश्न उठे निश्चित भाव में ताकू पूर्ववर्ती बा परवर्ती समय रे मो चिंता करे तबे सेई चिंता ही पिले से निर्दिष्ट कलमर गोटे डिस्क्रिप्शन हेई थाए अर्थात डिटेल्स हेई थाए ऑलराइट तबे जो ये कहीं की पिले ई स्मार्ट बोर्ड रे लिखिबा पई उपयुक्त हैला कहीं की खाता रे लिखिबा पई उपयुक्त हेइनी तबे एई प्रश्न भी जदि पचारिबी तबे निश्चित भाव में प्रथम ए कलम आसिला तापरे ए सब प्रश्न सृष्टि हैला यस और नो कथाटी बुझिया पे चेष्टा करो पिले ओके तुम सामने जो हेडिंग लेखा है आर्किटेक्चर ऑफ डिस्क्रिप्शन तेणु ये ही हूँ से स्वतंत्र भाषार
पिले मूल मंत्र जहाँ जदि आम बुझा तेबे ए इंग्राजी ग्रामर मध्य अति सहज लगिबो दैट मीन आम अति सहजरे आज तो सिंपल रे अच्छे परवर्ती समय रे आमे गोटे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बा जटिलता विषय वस्तु को नहीं मध्य आमे निर्दिष्ट परिस्थिति रे अन्य एक व्यक्ति को ठारे ले कॉन्फिडेंसली इंग्राजी भाषा रे कथा ही परिबा यस और नो ओके तेणु से जहाँ भी हो हाँ ना नहीं तेणु क्लास टू जब तुम देखुच तेज निश्चित भाव में पिले कनसेंट्रेटली प्रथम शुणव कहीं विषय वस्तुटी तुम्हें पूर्व पढ़ीच जदिओ पढ़िन एबे भी पढ़िबो पिले एई पीडीएफ भी तुम मानक मिलिबो किंतु एई कथा पछरे जो कहानी लुचिकी अछि जो विषय वस्तु लुचिकी अछि बस ताकू आमे शिखिबा ताकू आमे जानिबा ताकू आमे बुझिबा परवर्ती समय रे आम सांग साथी भाई भौणी जो माने मध्य अछंती तांको मध्य आमे बुझेइबा तत्सहित एई चैनल विषय वस्तु मध्य रे भी तांको आमे अवगत करेइबा ओके तेणु एई जो शिखिबा बुझिबा जानिबा आउ जणको बुझेइबा ताहा केते बेले संपूर्ण होबो बा केते बेले पिले ना दक्षता बा मो पाखरे जो कौन अच्छी पिले ये विषय वस्तु पर जो ज्ञान अच्छी तेरे ताहा निश्चित भाव में बा संपूर्ण परिमाण रे यस न पिले मो पाखक आसी पहुँचले ही मु जन को कहि पारिबी जन को बुझेई पारिबी निजे मध्य पिले बुझी पारिबी तेबे ताहा सेतेबेले संपूर्ण हबो बा तुम पाखक सेतेबेले पर्याप्त परिमाण रे ज्ञान पहुँचबो जेतेबेले प्रथमे तुमे मते सुनिबो ओके तेणु जी भी होना कहीं जहाँ भी तुम शिखा चाहूच जेकोसी गोटे मध्यम तुम जानवा चाहूच तेज निश्चित भाव में पिले प्रथम शुणा चेष्टा कर तेणु शुणा लोक ही सब बेले कौन हमें पिले लाइक उत्तम व्यक्ति भाव में परिचित हमें ताहा आम पूर्व जानीचे तेणु प्रथम शुणा परवर्ती समय जहाँ आम शुणीचे ताकू आम तर्जमा करवा ओके पिले बिना तर्जमार जदि ग्रहण करवा ताहेले असुविधा तेणु तर्जमा करवा आम शिक्षक जहाँ आमको कही सी कौन ठीक जदि ताहा ठीक तेबे ताहा आमे आम बापा माँ को बड़ भाई बड़ भौणी मानू तांको प्रश्न पचारिबा यदि सी जदि आम कथारे बा आमर एई विषय वस्तु सह पिले ठीक अच्छी बा सी जदि अप्रूव करेंगे लाइक निश्चित भाव में जदि एई जो डिटेल्स डिस्कशन जहाँ भी है येस दैट इज करेक्ट देन वी हैव टू रिसीव ऑलराइट तेणु जहाँ कह जाए ताकू मु जदि ग्रहण करी तेबे से ज्ञानटी वृद्धि पाई न थाए ऑलराइट तेणु जहाँ कह जाए ताकू प्रथम प्रयास रे बा जो प्राथमिक अवस्था ताकू मु ग्रहण करी परवर्ती समय रे जहाँ मो पाखरे आसी पहुंची ताकू नहीं मु तर्जमा करी तेबे ताकू नहीं पिले मु गोटे निर्दिष्ट व्यक्ति पाखरे तर्जमा कले ही तेबे से ज्ञानर मध्य कौन हम पिले परवर्ती समय रे से प्रतिफलित हम दैट मीन कौन ना जो निर्दिष्ट ज्ञानर पिले परिसीमाटी वृद्धि पाइब यही कारण हेतु ओके ठीक अच्छे तबे यही कारण हेतु तुम्हें समस्ते जो शिखिबा अवस्था रे अछ दैट मीन मो मध्य पिले शिखिबा अवस्था रे अछि तबे मो सबु बेले बा जो दृष्टिकोण रो चिंता करे तुम्हें समस्ते मध्य से दृष्टिकोण रो ही चिंता करबा आवश्यक रही दैट मीन पिले एहाकु जदि आमे ग्रहण करिबा तबे निश्चित भाव में शिखिबार जो निर्दिष्ट उपाय जानिबार जो निर्दिष्ट उपाय तत्सहित वर्तमान ए जो कॉम्प्लिकेटेड एआई दुनिया रे यस और नो पिले मॉडर्न दुनिया रे आमे जो दक्षता हासिल करिबा ताहा सेतेबेले संपूर्ण हबो जेतेबेले आमे जणको ठारू सुनी से शुणिबा विषय वस्तु को नहीं निज मन मध्य रे पिले कौन एक प्रश्नर आल्डन सृष्टि करिबा बा एक सही प्रश्न को बार बार निजे पचारिबा तार उत्तर पाई निर्दिष्ट व्यक्ति को जाई से प्रश्नटी आमे कहिबा यस और नो ऑलराइट तेणु से जहाँ भी हो मु कौन कहली पिले ओके ना जो आर्किटेक्चर रही तबे आर्किटेक्चर बा आर्किटेक्ट से कह जाए जो माने एक निर्दिष्ट विषय वस्तु को बा निर्दिष्ट वस्तु को तैयारी करती जमीती ब्रिज तैयारी करबा जमीती घर तैयारी करबा यस न पिले जमीती मूर्ति बा स्टैच्यू जमीती पिले गोटे खेलना तैयारी करबा जमीती ए जो टीवी तुम देखुच तेबे ए समस्त पछरे जणे जणे आर्किटेक्चर रही बा आर्किटेक्ट रही तेणु से निर्दिष्ट काम से माने से निर्दिष्ट व्यक्ति ही कौन करती पिले ना उपयुक्त होई थांती तेणु मो घर मध्य तैयारी करि पारे मो ब्रिज मध्य तैयारी करि पारे मो खेलना मध्य तैयारी करि पारे मो ए स्मार्ट बोर्ड मध्य तैयारी करि पारे यदि एई दृष्टिकोण मु देखिबी तबे से निर्दिष्ट व्यक्तिंकर संपूर्ण ज्ञान
प्रत्येक क्षेत्र में न थाई पारे ऑलराइट तेणु से जो आर्किटेक्ट कहा जाउची से जो विषय वस्तु उपरे आमे कथा हेबा पई जाउची तेणु से जहाँ भी हो एथिरे कोनोसी घर तैयारी करिबा एथिरे कोनोसी खेलना तैयारी करिबा विषय वस्तु उपरे नहीं बस हम समस्तंकर जो उद्देश्य रही थंबनेल रे मध्ये तमे देखि सारी छ पिले कि आमे सिंपल सेंटेंस को केमिति लेखिबा ऑलराइट तबे लेखिबा को प्रस्तुत हेबा पूर्वरु मस्तिष्क मध्य रे भाबिबा यस और नो पिले तेणु से मस्तिष्क भावना को ही शब्द रे परिप्रकाश कले ताहा लेख बा लिखनी अवस्था रे कौन हुए ना जना पड़ी थाए ऑलराइट यही कारण हेतु आमे जिते बेले गोटे विषय वस्तु को नहीं कि किसी डिटेल्स लिखिबा पई चेष्टा कले हाँ ना नहीं तबे से डिटेल्स सेते बेले संभव हैला जेते बेले पिले वस्तुटी मुख्य भाव रे आसी पहुंचेला दैट मीन बुझिबा पई चेष्टा कर ऑलराइट मु टिके पछो फेरी जीवी निश्चित भाव रे पिले आमे सिखिबा डिटेल सिखिबा यस और नो देखो सपोज पिले मो घर तैयारी करिबा पई चाहूची ऑलराइट तबे एई घर तैयारी करिबा पई इटा हैला हाना नहीं पिले बाली हैला पत्थर हैला ओके गुड़ी हैला यस और नो तबे विभिन्न सीमेंट मध्य ऑलराइट ओके तेणु पिले रड भी रही छी ओके हाँ तेणु यही समस्त विषय वस्तु आवश्यक हुए तेबे से घर तैयारी करिबा पई जे मिस्त्री आसंती बा जे आर्किटेक्चर आसंती बा से आर्किटेक्ट जो प्लान दियंती तेबे सेही प्लान देबा समय रे बा सेही घरटी को प्रस्तुत करिबा समय रे प्रथमे एई सबु विषय वस्तु को से प्राधान्य दियंती हाँ ना नहीं केते इटा लागिबो केते बाली केते सीमेंट केते रड केते पत्थर केते गुड़ी लागिबो डिटेल से कही थांती तबे जो आर्किटेक्चर आसंती बा जे घर कोन पिले मिस्त्री ओके यस और नो आमे देखिबा पिले आर्किटेक्चर विषय वस्तु ऊपर आमे इंजीनियर कथा आमे कथा हेबा किंतु मिस्त्री को मध्य आमे कहि परिबा जेहेतु आमे विषय वस्तु को जो उद्देश्य रे बुझिबा पई चाहूचे तार सही मूल उद्देश्य पाखु आमे एपंत पहुंची नै बस पहुंचीबा सेते बेले जेते बेले साधारण विषय वस्तु को ही साथी रे नेबा दैट मीन ए मिस्त्री पिले घर तैयारी करिवे तबे पछकु फेरी आस जे वाक्य गठन करे बा वाक्य तैयारी करे हाना नहीं पुनी से वाक्य तैयारी करबा पछरे कोन अछि पिले ना प्रथमे तो शब्द ज्ञान आवश्यकता अछि जहा को मु वर्ड बोली कहि पारुछि परवर्ती समय रे से जमिति इटा बाली पत्थर गुड़ी सीमेंट रड रो जो आवश्यक लढिले ठीक सेही परि एथिरे मध्ये आमे नाउन हैला यस और नो प्रोनाउन हैला ऑलराइट पिले एडवर्ब हैला ओके वर्ब हैला एडजेक्टिव हैला हाँ ना नहीं आर्टिकल हैला ओके यस प्रीपोजिशन हैला तबे एमाने समस्ते आवश्यक ओके बुझिला तेणु एई क्षेत्र रे एहा हमें जेमिति आवश्यक लड़िले तेणु एई वाक्य तैयारी क्षेत्र रे मध्य एई सब समस्त हमें आवश्यक लड़िले ओके तेबे एथिरे मध्य हमकु गोटे नुआ घर देखिबा पई मिलिबो किंतु सेई घर पिले सिंपल घर ऑलराइट कोन जहाँ हमें नॉर्मल कही था यस न पिले नॉर्मल हाउस हैला ओके किंतु एई घर को जदि मो मॉडर्न ओके मॉडर्नाइज करी हाँ ना नहीं तबे ताहा पुणी स्पेसिफिकली अन्य विषय वस्तु बा सामग्री मध्य मो आवश्यक लड़ीबी तेणु प्रथमे आमे नॉर्मल घर तैयारी करिबा एथिरे मध्य नॉर्मल वाक्य आमे गठन करिबा बा सिंपल सेंटेंस ओके यस और नो पिले आमे कोन जानिछे ताको सिंपल सेंटेंस बोली आमे कहूचे जेमिति ये सिंपल हाउस ये पिले सेही परी सिंपल सेंटेंस हाना नहीं तेणु एई सिंपल सेंटेंस लिखिबा समय रे कहा कहार मो आवश्यक लड़ीबी बस ताको आमे पूर्वरु पढीचे ओके तबे ताहा कोन पिले सर आमे नाउन पढीचे 100% वर्ब पढीचे ऑलराइट आउ एडजेक्टिव पढीचे
तेबे जेतेबेले नाउन और वर्ब आसिला तेबे सेमाने पिले परस्पर परिपूरक अवस्था रे कोन करले ना उभय उभयंकर आवश्यक लढिले हाना नहीं काली मु गोटे विषय कहिथिली जेमिति बड़ भाई जदि कहंती सान भाई एग्री ही जानती जदि सेमाने गोटे घर रहंती हाना नहीं तबे से समान विषय वस्तु एथिरे जो एडजेक्टिव आमे देखिले तबे एडजेक्टिव होउछि बड़ भाई पिले तबे से एडजेक्टिव रो सान भाई होउछि आर्टिकल ओके बुझिल तेणु एडजेक्टिव जहाँ डिसाइड करे एडजेक्टिव जहाँ कहे से आर्टिकल सहमत हुए ऑलराइट यस और नो है ओके ठीक अच्छे देख तेणु यही जगार आम एडजेक्टिव पढ़ा सहित आर्टिकल को मध्य आम साथी नहीं चलवा ओके बुझिल यस और नो पिले तेणु सिंपल बा नॉर्मल देख पिले नॉर्मल घर तैयारी करने साधारणतः भाव में जहाँ आवश्यक ताहा आम लड़िले किंतु ताको जदि आम मॉडर्नाइज करबा तबे तार अन्य सामग्री मध्य रही ताको आम नहीं आसवा तेणु से मॉडर्नाइज घर को आम परवर्ती समय रे देखिबा परवर्ती क्लास रे आम तैयारी करबा किंतु ता पूर्वरु जहाँ रिक्वायर्ड अछि एज अ सिंपल सेंटेंस तबे ताको आम बुझिबा सेही कारण हेतु केते गुडिया नॉर्मल वर्ड को नेकी जदि आम साथरे चलिबा लाइक नाउन हला वर्ब हला एडजेक्टिव हला आर्टिकल हला बस यही चारिटी शब्द ही निश्चित भाव में तुम मानू से सिंपल सेंटेंस बा जो सरल वाक्य अच्छी ताको भाविबा आउ चिंता करिवार राह देखैबो ऑलराइट तेणु जहाँ समस्त मनर मध्य भय थाए आम डायरेक्टली पिले सेंटेंस कहवा मात्रे मो से टेंस फॉर्मेट को चली जाए किंतु टेंस पिले पर आसी जेतेबेले आमे एई तीन काल विषय वस्तु को नहीं कथा हेले किंतु से कथावार्ता केतेबेले संभव हो पारिला जेतेबेले पिले मो चतुर्पार्श्व जो वस्तु अच्छी तेबे सेई वस्तुर निर्दिष्ट ना जहाँ को मु शब्द बोली कहूछि तेबे ताहा मो पाखरे आसी पहुँचला तेणु से शब्द ज्ञान ही एक उपयुक्त माध्यम हुए जेतेबेले एक निर्दिष्ट भाषा शिखिबा पई मु चेष्टा करे तेणु प्रथमे एथिरे आमे कोन प्राधान्य दउछे कि ताहा इंग्राजी हो कि ताहा पिले जे कोनोसी एक लैंग्वेज हो बा भाषा हो से मु प्रथमे चेष्टा करी शब्द को शिखिबा पई शब्द ज्ञान को शिखिबा पई तापरे से शब्द मानू मु केवल अरेंज करी बा सजेइबी एति कथा पिले आउ किसी नुह तापरे आमे तबे देख एई क्षेत्र रे कोन हैला मु ग्रामर विषय वस्तु पर ही कथा होउची किंतु मु कहूची जेमिति आमे ग्रामर को आमे कोनोसी भाव रे एथिरे आमे विषय वस्तु रे आलोचना ही करू नाहु किंतु से ग्रामर सहित आमे चली छे ऑलराइट जदि मो एहा तुम मानू ग्रामर 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 बोली यदि प्रत्येक समय तुम मानू कहे तबे निश्चित भाव में तुम समस्ते बोझ उपर नलिता भिड़ा परी कौन पिले गोटे जो परिस्थिति रे तुम थिलो एई भाषा को शिखिबा पूर्वरु बा जीए मध्य जोठी मध्य शिखिछ जो जगार मध्य रहिछ तबे से समान परिस्थिति को पुणी थरे चली जीवो अने नहीं तेणु मनरे गोटे प्रश्न बा निज सबु बेले चिंता कर कि काहेकिर प्रश्न पचारा निश्चित भाव में तार पिले सठिक उपाय तुम मान पाखे आसी पहुँचब टेंस ग्रामर इंग्राजी परीक्षा रे आसे एप्लिकेशन लिखिबा कहती आंसर लिखिबा कहती जितेबले मु लिखे ताहा भूल ही जाए तबे एई डिटेल्स विषय वस्तु सबु बेले कौन करे हमको प्रतारणा देई थाए दैट मीन पिले आमे प्रत्येक समय भावी थाउ मु कहिछि ना ग्रामर केबे मध्य संपूर्ण हबनी ऑलराइट पिले से इंग्राजी भाषा कहवा व्यक्ति बा देश मध्य ग्रामर बही पढ़े आउ ओडिया भाषा आमे निजे कहूछु अति सुंदर भाव में हेले मध्य आमे ग्रामर को पढ़ू तबे एथिरे ग्रामर को आमे संपूर्ण बोली कहिबा कि कदापि नुह से लाइफ टाइम जाको आमे शिखिबा पिले तेणु से ग्रामर रो ए जो विराटकाय रूप को बुझिबा पई मो निश्चित भाव में लॉजिक ऊपर प्रश्न करी तबे ए विराटकाय द्रुम को अति सहज रे मो कौन पिले ना निश्चित भाव में अति सुंदर बा विदाउट एनी डाउट्स है नहीं निर्भय रे मु चढ़ी समस्त फल को मु ग्रहण करि परिबी यस और नो ऑलराइट तेणु से जहाँ भी हो तेणु आम नाउन है भर्ब है एडजेक्टिव है आर्टिकल है चारिटी विषय को नेबा ओके कहीं ना आम सिंपल रे अच्छे पिले वी आर नॉट इन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ओके वी आर नॉट हियर टू डिस्कस समथिंग व्हिच इज मोर कॉम्प्लिकेटेड ऑलराइट वी आर हियर जस्ट टू टॉक अबाउट द सिंपल व्हाई definitely after the word when people when animal try to speak definitely he will use the word only and in that time what he think fit
a group of word, when they mix, then they like form a sentence. And at that time, she thinking, yes, these are those simple sentence. Yes or no? Okay, ठीक अच्छे आम नॉर्मली कथा हवा फाइन देख पिले हो गला चलो आम आग को या समराइज करवा तेणु भाविबा आउ लिखिबा यस और नो राइट एंड थिंक कौन पिले द अल्टीमेट गोल इज सिंपल व्हाट सेंटेंस ऑलराइट तबे ए सिंपल सेंटेंस मु विदाउट एनी ग्रामर रूल यस और नो मु कहिबी मु शिखिबी मु चिंता मध्य करिबी मु आज एप्लिकेशन मध्य लिखिबी बा दरखास्त मध्य लिखिबी ऑलराइट ठीक अच्छे पिले तेणु ये जो सिंपल घर को बा सिंपल सेंटेंस को तैयारी करबा पे सिंपल जिंस ही आवश्यक है जेमिति हम सिंपल घर को तैयारी कले ओके तेणु से सिंपल कंपोनेंट इंग्रेडिएंट कॉन्स्टिट्यूएंट रिक्वायर्ड मटेरियल केतोटी पिले मु शब्द कहली तबे से समस्त शब्दर गोटे ही अर्थ जेमिति बाली गोड़ी माटी इटा पत्थर आम आवश्यक लड़िले गोटे नॉर्मल घर को तैयारी करने ठीक से परी जहाँ एमानंकु आमे से घर तैयारी बा मो जो सब सामग्री नहीं पिले जो घर तैयारी हबो ताहा क्यों परी हबो ताहा मो ऑलरेडी जानी सारी छे सिमिलरली here is as well I have to consider some of the component what are that component are the parts of whom the sentence only all right घरर कंपोनेंट कौन घरर पार्ट्स कौन सर माटी बाली पत्थर गोड़ी एटा सीमेंट रड तबे सेंटेंस रो कंपोनेंट कौन ठीक सही परी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशन आर्टिकल एडजेक्टिव like this किंतु we are here in simple okay world when language okay was started fine before this language people or animal only think a specific word what they pronounce yes or no पिले तमे अष्टाध्यायी पाणिनि विषय शुणीच टॉलेमी विषय शुणीच जदि शुणीन व्यस्त होवार नहीं दे आर द ग्रामर दे वर द ग्रामरियन एंड दे फॉर्म्ड द लॉजिक दे क्रिएटेड द लॉजिक ओके वी आर हियर टू अंडरस्टैंड देयर लॉजिक हु आर दे वर नॉर्मली अ ह्यूमन बीइंग ओके सिमिलरली तेणु ये सिंपल दुनिया को जीवा पूर्व आमे वर्ड रो ही आवश्यक लड़िले तबे सही वर्ड जेते बेले मो सामने आसी पहुंचला लाइक कलम ना नहीं पिले सपोज पुस्तक ओके एई गोटी गोटी वर्ड को मो प्रथमे शिखिली बा ताकू एई परी कुहा जाए बोली मो जानिली पुणी एई कलम रो डिटेल्स जेते बेले मो कथा हेबी याकू स्मार्ट बोर्ड रे लिखा जाई परिबो ना खाता रे लिखा जाई परिबो एई जो पुस्तक अछि सेई पुस्तक केउ भाषा रे लिखा जाईछि बा ये निर्दिष्ट भाव रे भूगोल ना इतिहास और राजनीति विज्ञान किबा भौतिक विज्ञान कि रसायन विज्ञान कि जीव विज्ञान सेई भितर आडो को आमे जेते बेले गले तबे एथिरे ही आमे जहा भी पिले एथिरे जो आवश्यक लढिले तबे यह केते बेले संभव हैला जेते बेले एई पुस्तक आसी आम सामने रे पहुंचिला दैट मीन प्रथमे पुस्तक काहाकू कहा जाय बा पुस्तक कहिले कोन आमे ताहा जानिले ताहा आमे परिचित हेले परवर्ती समय रे से पुस्तक रो निर्दिष्ट परिचय आमे जेते बेले खोजिले बस ताकू ही एथिरे डिस्क्रिप्शन बोली कहा गला बा डिटेल्स बोली कहा गला ऑलराइट तेणु बर्तमान तुम बुझी पारुछ कि सर ये जीव विज्ञान कि ये इंग्राजी भाषा रे लिखा जाइछि कि ओडिया भाषा रे लिखा जाइछि तबे से जहाँ भी होना कहीं की किंतु से जो जीव विज्ञान है से भाषा रे लिखा जाइछि हैला ताहा केते बेले संभव हैला जेते बेले ए पुस्तक प्रथमे आसी पहुंचिला तेणु ए पुस्तक रो परिचय पाइबा ही आमे कोठी ना कोठी सिंपल दुनिया रु कॉम्प्लिकेटेड दुनिया आड़ को जाउछे हना नहीं यस और नो पिले ऑलराइट तेणु व्हाई द वर्ड आर इंपोर्टेंट दैट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड यू
and we are here to just, okay, play. That means we are not here to just learn the grammar. We are here to learn the things that always I wondering myself if when I'm able to speak, when I'm able to write, when I'm confidently answer the question in the classroom. These are the main motto. But this motto will be complete if you go through this way. And hence you will definitely realize how simple is it. Apart from that, if I start from the grammar, then what you feel yourself? Something different. आकाश कया चिलिका माछ. Yes or no? All right. ठीक अछि. तेणु से जहाँ भी हो, तबे description हैला पिले. तेणु एई description तैयारी करिबा पछरे एई पिले कंपोनेंट रो जेमति बाली गोडी इट्टा माटी पथर जहाँ भी आमे देखिले ताहा प्रथमे आसिला तापरे केते सुंदर घरटी तैयारी हैला. तेणु এই जो डिटेल्स दुनिया जीव विज्ञान रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान भूगोल राजनीति जहाँ भी हो तबे ये आसिला परे ताहा संभव हैला. ओके तेणु ए डिस्क्रिप्शन को तमे केते सहजरे कहूचो दैट्स मैटर हियर. ए डिस्क्रिप्शन तुम पई जदी अति सहज अछि दैट मीन पिले अच्छा एथिरा हम डिस्क्रिप्शन आडो गुटिके जिबा. देखो बुझिल. तेणु यही कलम प्रथमे आसिला. कलम पर ये डिजिटाल ना ये पिले खातार लिखा पर कलम से विषय में प्रश्न पचारे सो दैट आम एक निर्दिष्ट कौन पिले परिचय पाइले. तबे कलम आसिला बोली से परिचय पाइले. तबे से परिचय को आम किपरि परिप्रकाश करूचे. हाउ वी एक्सप्रेस दैट आइडेंटिटी ऑफ दिस प्लास्टिक पेन. When it able to write on the smart board, then this become digital. But like the pen, or sorry, like this pen or this type of pen, okay, if that or if I will try to write some note in my note copy, then this become not digital, or this will not identify as the digital, and that is the main reason. Fine. So we are here description. And this description, in other word, we can say the paragraph. What we learn? Okay, we already covered some of the some of the class about how to answer the paragraph in OAV exam, in JNV exam, in class exam as well. You just try to learn that. And in there also I try to, understood some of the technique. How we able to answer all the question very accurately within the less period of time. Okay, just try to watch that all session which already covered. Okay, fine. All right. Then a description hi paragraph. Bas yes or no pile. But this paragraph becomes, sorry, again come back to the word. This word become paragraph when you are right in the form of sentence. Where is it? This is. Okay, yes or no? All right. But this word become a way of thinking, like a way to express something that we feel inside. When that becomes speech. Do you get it, my point? What I'm trying to identify. As we already learned about the speech and the sentence, and before this class, I also aligned with why sentence are the same word as the speech as well. Okay, fine. Then this become paragraph when you express this word in the written format, and this become a normal speech when you have not written, just only speak. Yes or no, Billy? All right, that is the reason. And whatever the situation, whether that paragraph or speech, it doesn't matter. The matter is here how to write and how to think. And that is the reason write and think
are the basic entrance or basic details to dive into the description box. Okay, पिले टिके हार्ड हे जाउचे बट सम देखो मो मध्य सिखुचे आई एम आल्सो बिलोंग्स टू ओडिया मीडियम यू नो. ओके फाइन तेणु से जहाँ भी हो बस एति कथा तेणु जो कंपोनेंट पिले निया जाइछि घर तैयारी करबा पई बाली माटी गोडी पत्थर जहाँ नेले ठीक से पूरे आज सिंपल सेंटेंस हमें तैयारी करबा तबे कोन नेबा ताहा हमें एथिरे बुझिबा पई चाहिए दैट इज पिले नाउन वर्ब ओके एडजेक्टिव यस और नो और कौन मिले आर्टिकल. ओके तेणु पिले काली क्लास भी बहुत इंपोर्टेंट. नाउन और वर्ब से माने भाई भाई नहंती केवल वर्ब चाहिए भी किसी करि परिबनी केवल नाउन चाहिए भी किसी करि परिबनी तेणु दुई जनकर मतामत आवश्यक अछि. दुई जन चाहिए तेबे जाई संपूर्ण हबो. किंतु adjective and article they are the bhai bhai. Fine. Okay, so in this situation if adjective says something then article will obey as adjective is my elder brother. What he will decide then I also agree as they belongs to one house. Fine. So you have to understand much more about noun and verb as they are specifically important while we trying to make that sentence. But right now we are talking about simple sentence. Fine. Okay. Yes or no पिले राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा. All right. ठीक अच्छे चलो तेणु आम सेंटेंस पाखक जीवा आम से सेंटेंस को केमिति आम सिंपल सेंटेंस रे आम कन्वर्ट करिबा. ओके पिले मो गोटे सेंटेंस लिखुची. अच्छा डिटेल सिचुएशन बुझिलो मो प्रत्येक समय रे देखो आमर एक्चुअली मेन गोल कोन पिले आमर एक्चुअली मेन गोल होउची ना आरंभ दिन रो ही आम कथा होउची जे ई शब्द ही आवश्यक आम लड़िले प्रथमे तापरे जाई कि आम सेंटेंस रे पहुंचिले किंतु इस वर्ड रो सेंटेंस रे पहुंचीबा पई विषय वस्तु एपरि हैला कि सम पॉइंट ऑफ टाइम if I want to describe then that become complicated or that become simple and that complicated and simple things पिले कोन होइछे ना they also express some situation they also express the like weightage or the in depth of that कोन mean for whom we are talking right now. All right तेणु से जहाँ भी हो वर्ड रो सेंटेंस रे पहुंचीबा तबे वर्ड रो सेंटेंस रे पहुंचीबा ताहा ही हम समस्तंकर मूल उद्देश्य बा मुख्य गोल. तेणु आमे एथिरे से वर्ड रो सेंटेंस को जीवा पूर्व एमान को आमे आवश्यक लड़िले बस आमे अरेंज करिबा. वी आर नॉट हियर टू डेल्व इन द वर्ड द ग्रामर एक्ट्स हियर नाउ आवर मोटो इज टू रीच फ्रॉम वर्ड टू द सेंटेंस दैट्स ऑल. ऑल राइट फॉर एग्जांपल पिले here is a word hurry, here is a word okay book, here is a word read. All right here is the three word. Yes or no? Okay I will take a separate page as well but don't worry just think what I have written. All right okay देखो पिले सो मु कौन लिखिली मो पाखरे तीनटा वर्ड मु लिखिली पिले देखो मो suppose if my name is Somya Ranjan like this then in English as well people also call me Somya Ranjan. There will be nothing that I will if I have to say in a different way. Yes or no? This is an Odia Kolomo but this is an English pen. All right but the naming word are not sometime what I have written over here is hurry. Mean hurry you know the Odia name. In English as well we say hurry. Fine so don't be panic. Okay fine so hurry I have written book I have also written read. Fine here is the three word. At first if I want to express ki hurry bohi padhuche
So I think first कि right now, yeah, suppose I want to say something about Hari कि he से बही पढ़ुची, तेणु या मु आउ जन को कहबी ये तो चिंतार ही रहिला, ये तो मन भितर ही रहिला, ताकू मु शब्द माध्यम प्रकाश करी, तबे एमान को किए कहा पर रहिबो ताकू मु अरेंज करी, and that arrangement matters here. All right, okay, don't try to forget. We also read the two specific word, adjective and article. Okay, fine, just see, play Hari book. If I want to get the identity of these two words, then definitely they are the noun. Here is the naming word. Basically, Hari mean a person name, and book, it is likely a what we like our school book mean, yes or no, play classroom book mean आमे ताको पुस्तक बोली कहूचे, बही बोली कहूचे, व्हाटएवर. तेणु एमाने होउछंती नाउन. सर किंतु आपण कहिथिले ना नाउन एकला कोन करि परिबो किछि नाही. तेणु नाउन रिक्वायर्ड his 50%, and that 50% will be complement when verb will come, and that verb here is read mean पढ़िबा हा ना नहीं, yes or no बिले. तेणु ए read होउछि verb बस. All right, so first of all I just think about कि हरि बही पढ़ुछि. After that, if I want to express in English language, yeah, any sentences, just I want to arrange this word only. And if I arrange, then before that we have to like check whether that word are noun or verb or not. And we already said it ki Hari and book are noun, but read is the verb. Fine. So next कौन प्ले नेक्स्ट आमे देखिबा कि सेही वर्ड को केमिति आमे अरेंज करिबा so that that word make कौन खाली ग्रुप ही गले होबनी. Finally that word has have to express the sense, and that's the ultimate goal of grouping of word in a sentence, and that we termed as the part of speech in the grammar world. Do you get my point? Fine. Okay, see, suppose, and I know first of all noun will come, as noun and verb togetherly make 50% of the of that sentence sense. Do you get my point? That's why in the first point of time, when I understand exactly the what identity of that word, we delve in what is noun, what is verb, what is adjective, what is pronoun, what is article, what is preposition, like this. And every word in this world, what we say in the English, that word has the specific identity, and that specific identity, okay, completely belongs to this part of speech. And that's why while I say read, that not become noun, but that become verb. Yes or no? But we were always कौन बिले सर आमको ग्रामर ही पढ़िबार अछि, सेंटेंस ही कहिबार अछि, but that's wrong. That way is wrong, right? And that is why how this sabda bhandar or word knowledge is important before you going to that specific, okay, language world. Mean if I want to speak in English, if I want to write in English, then definitely there is like the situation comes in my mind first, that is the grammar. But that's wrong. Not first grammar, my boys, it first the word. Fine. The ancient people now trying to saying ki Hari is playing, Hari plays, like this. The ancient people just trying to think ki is that person name is Hari, then what he is doing right now, he is playing. But they try to understand what we say, that situation, that play. Fine. Okay, yes. So let me arrange this word, and you know first noun will come, after that the verb, and they are complement to each other. As if only noun wants to make the sense, then it doesn't possible. If the verb want to express the sense, then also doesn't possible. That's why noun and verb will come, okay, one after another. And finally we conclude here that ki noun and verb
only express the 50% sense of that sentence. Whether that sentence simple or complicated, that depend upon the description. This is my motto to express you. Fine. Okay. So I have written, as I know, I have to write Hari first. Then, sir, we have another noun, that is book. Let me try to write after, book after Hari. Let me check whether that correct or not. And this is the way, this is the technique that we are trying to understand in each and every sentences, what we discussed right now. Fine. So here I have written book. Okay. Sir, ଆପଣ କହିଥିଲେ first noun ଆସିବ, after that verb ଆସିବ. Let me place verb then. What is that verb? Read. So now read it out. Hari book read. Yes or no? What do you think? Hari book read. Sir, this statement or this sentence has no sense. Right? Why no sense? As Hari book read mean it is something different. Hana nahi? Yes or no pile? Alright. Jemiti कौन अच्छी हरी भलीबॉल खेलुची यस नो पिले तबे एथिरे जो वर्ड रहिला व्हाट आर दैट वर्ड हरी भलीबॉल एंड खेलुची तबे मु कहिबी भलीबॉल खेलुची हरी इट कुड बी मतलब ये तो ही पारे बट ट्राई टू थिंक कि भलीबॉल हरी खेलुची पिले इफ आई से देन दिस स्टेटमेंट हैज नो सेंस এই কারণ পাই আমি যেতে ভালো ওড়িয়া কহিলে মধ্য আনা নাই প্লে ইস্ট টু ওয়েস্ট our ওড়িয়া language is synthesized. Okay, that different thing it greatly define in our cultures. আনা নাই তুমি দেখিব কলাহান্ডি সম্বলপুরে যে ভাষা the same ওড়িয়া ভাষা are not speaking in coastal belt. But whatever the situation, it doesn't matter, but we have to understand the logic why that happened. And that logic is simple. And that, to arrange the word. So what I'm saying in Sambalpur, that different or the language, the dialect is saying in coastal belt is different. But when we both are right, that central gist or the idea, then we have to obey the grammar. Kana khailo, kono khailo. But लिखला बेले कौन खाइलो ही लिखिबा इज दैट द रीजन फाइन ओके तेनो आमे स्पीकिंग विषय वस्तु रे कथा हला बेले डायलेक्ट टू बी कथा हबा बट इन दिस स्टेज वी आर नॉट लर्न दैट ओके फाइन तेनो देखो आमे खाली अरेंज करिबा सो आउरी गोटी ग्रेट वर्ड म तुमको कहिथिली ग्रेट डिफरेंस म तुमको कहिथिली प्रत्येक समय रे भी म कहि के आसुची कि नाउन एंड वर्ब दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर्स. If they both come, then after something becomes, that becomes things is finally make sense, and that we say a simple sentence. Fine. That is why Hari and book को मते separate करिबा को पड़िबो. हाना नहीं. If I separate both of them, if I write Hari here and book is there, then who left? Read. So in the vacant space of Hari and book, I want to just place the verb. What that verb? Read. Fine. See. Hari read book. Sir, a sentence टिके complete sense एबे पंतो भी आसीनी. Sir, हमें ए sentence टिके ठीक ठाक लगुचे. All right. Hari read book. Then जो हमें logic कथा होथिले why noun completely or why कौन अछि verb completely can't decide the fate of a sentence, and that's why they required some different arrangement, and this arrangement traditionally we also we have been learning since our childhood. That's subject, verb and object. Hana nahi? Yes or no, my dear student? All right. Yes. Tebe age subject completely that noun, and that's why we say subject whom we are trying to express, whom we are trying to give more detail about it, and that's noun. Kolomo, after that I say this is a digital pen, and that is the something extra information about this pen. Hana nahi? But moko upaya re kahuchi, and that upaya will define whether that is simple or complicated. Okay.
फाइन देख पिले दैट मीन आमे जो टेंसेस पढुचे ना तबे टेंसेस रो जो भिन्न रूप को ही मु कहूचे simple sentence, simple present, simple past, simple future. But things when things become much more complicated or we want much more details about it, then that become present progressive, sorry, yes, past progressive. पुणे आउरी complicated करिवा then present perfect progressive, past perfect progressive. What are all these? The thoughts that we think inside our brain आना नहीं पिले आमे एमिति भी खाई परिबा आमे अति सहजरे मध्य खाई परिबा किंतु बुझिला बेले आमे बुझुचे जहा ताहा ही हम सामने थे व्यक्ति को आमे कहि थाउ तेणु सिंपल वर्ड रे भी तमे कथा ही परिबो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड रे भी तमे कथा ही परिबो हाई फाई इंग्लिश एंड सिंपल इंग्लिश आना नहीं तेणु आमे से जहा भी हो आम थंबनेल रे कोन अछि राइट एंड थिंक व्हाट सिंपल सेंटेंस and that is the primary requirement to learn the modernized things, modernized sentence. And that's why while we make the simple house how we imagine, and at that point of time if I want to make a modernized house, then think the component also required something different, not ita bali mati pathor godi. Then when that house become modern, then we have to also include some of the different ingredients or some of the different components. And से component जते बेले आसीबो ग्रेजुअली से घर भी मॉडर्नाइज हे जिवो तेणु आमे स्लोली आमे सिखिबा पे चेष्टा करू छे दैट्स व्हाई प्रथमे सिंपल रो ही परवर्ती को मॉडर्न को जिबा आना नहीं पिले ओके चाल छपर घर रो आजी कोन उन्नत ओके उन्नत विराट अट्टालिका मध्य तयारी हे कि आज हम सामना रे अछि तेणु सेथिरे सी भी घर ये भी घर पिले बस बुझिबो देन एवरीथिंग बिकम्स वेरी इजी फाइन हाउ तेणु से जहाँ भी हो तेणु यही जगार आम यही फर्मुला को आरंभ जेकोसी गोटे बही को तुम देख यही फर्मुला लिखाई थी ओके यही कारण हेतु यही जो सब्जेक्ट अच्छी यही जो पिले ऑब्जेक्ट अच्छी तबे ऑब्जेक्ट किए ऑब्जेक्ट रे भी नाउन रहूची ऑब्जेक्ट रे भी नाउन रहूची दैट मीन हरी इज ए नाउन बुक इज आल्सो ए नाउन बट इफ आई थिंक इन दिस ओके कौन मिले एई फॉर्मेट रे जदि मो कथा हेबी तबे एथिरे ऑब्जेक्ट बुक रहिबो सब्जेक्ट हरि रहिबो तेणु सेई सब्जेक्ट वर्ब सह गोटे उत्तम संपर्क रखिबा पई एई सब परिस्थिति को से आवश्यक लडुची एंड दैट्स व्हाई we are okay talking about in every situation why subject can't express the sense of that sense and why verb okay separately can't express that sense of that verb, and that's why they both have to agreement, and that agreement we already like talk but not details discuss okay details about it and what we learned about subject verb agreement ana nahi yes or no my dear student subject verb agreement fine बुझिला कहीं कि आमे verb सह ए noun रो agreement हला और ए प्ले फॉर्मेट हम पाखरे आसी पहुंचिला तबे एई फॉर्मेट को जते बेले मो सेंटेंस रे देखिली तबे बुक मध्य तो नाउन हरि मध्य तो नाउन तेणु एथिरे आपण कोन कहिबा पई चाहू छंती सर तेणु सेई जो क्वेश्चन रो डिटेल्स तोर नेक्स्ट सेशन रे तमे पाइबो फाइन तेणु से जहां भी हो हरि रेड बुक सर ये तो ठीक ठाक लगिला बट नॉट कंप्लीट राइट नाउ मीन ये कंप्लीट सेंस यार आसीनी एंड दैट्स व्हाई इन एवरी मोमेंट ऑफ टाइम आई आल्सो एक्सप्रेस व्हाट प्ले adjective and article fine okay अच्छा सेम सेंटेंस को हमें उठेइबा कोन अछि हरि read book subject verb object fine okay तेणु आमे एथिरे कथा हेले adjective yes or no पिले वो article तबे ई adjective and article आर भाई भाई not like noun and कोन verb से मानकर एग्रीमेंट हेले ही से माने मिसंती काहे कि ना से माने गोटिए घर रो नहंती तेणु हरि आउ बुक पिले तांकर जो परिचय थिला हरि सब्जेक्ट हैला किंतु बुक नाउन ही कि मध्य ऑब्जेक्ट हैला काहे कि से माने एग्रीमेंट करूछंती हाने नहीं मो सामने रे व्यक्ति जो कथा कहिबे तांको सह मो एग्री हेले ही से मो सहित मिसिबे नहले नाही एंड दैट्स व्हाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आमे बाध्य हेले पढिबा पई
तबे से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रे पिले कोन अछि कहला किसी नुह केते गुडिए कोन अछि पिले आवश्यक जहाँ वर्ब मांग बा सी तार जहाँ इंपोर्टेंस से लढी छि बस सेती कथा बट नाउन मध्य तार भी से निजर इंपोर्टेंस से रखी छि जेमिति मु जेते बेले प्लुराल हेबी तबे सही समय रे तमे कोन हबो वर्ब तेणु एथिरे ही प्लुराल और सिंगुलर गोटे दस्तावेज दैट मीन ए गोटे सॉरी चुक्तिनामा पिले जो एग्रीमेंट आमे पढुचे तबे से एग्रीमेंट रो गोटे चुक्तिनामा होउचे सिंगुलर एंड प्लुराल फर्स्ट केस सेकंड चुक्तिनामा कोन अछि जेते बेले सब्जेक्ट रो जेंडर चेंजेस हुए जेमती एक्टर हैला आउ एक्ट्रेस हैला डू यू गेट इट माय पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर हैला एडमिनिस्ट्रेस हैला यस और नो पिले तेणु एडमिनिस्ट्रेटर आमे से मानू कहिबा जो ऑफिसर रहंती दैट मीन से ऑफिसर जो जेंडर अछि दैट मस्ट बी मेल देन वी से एडमिनिस्टर बट इन केस ऑफ मैडम we are not say administrator we say administratress all right headmaster and headmistress do you get my point तेणु यह भी सेकंड चुक्तिनामा आसिला मु जेते बेले मोर मो लिंग परिवर्तन करिबि तबे सही समय तुम केमिति व्यवहार करिवो ताहा भी गोटे चुक्तिनामा हे कहले एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी से नाउन या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पिले एग्रीमेंट ही दैट्स यू नो फाइन ओके फाइन तबे एई एडजेक्टिव पिले कहा पाखरे रहिबो तेणु एडजेक्टिव तो इंडिपेंडेंट हरा नहीं पिले कहीं ना सब्जेक्ट वर्ब ऊपर समस्त निर्भर यस और नो प्रेसिडेंट एंड पीएम ऑलराइट तापरे जेती कैबिनेट मिनिस्टर असंती से माने दे हैव टू अप्रोच प्रेसिडेंट एंड पीएम देन द मैटर विल सॉल्व अदरवाइज इफ only the cabinet minister wants to say wants to resolve something then it would not possible all right what I'm trying to understand you ana nahi pile okay एही कारण हेतु एही सेंटेंस रो जो कंपोनेंट हमें पढुजे सेथिरे नाउन और वर्ब ही इंपोर्टेंट होंती and that is why the classical format is subject verb and object what are object they have not gave detail about it but they just say subject and verb and when I ask the question separately to the subject and that becomes if I ask the subject specifically then that all are the noun if I ask verb specifically then all are the verb that's all but if I ask object then what I think nothing specific fine okay केडे चालाक okay तेणु देख पिले तेणु एमाने तो डिपेंडेंट तेणु एमाने सबु बेले कौन पिले पीएम और प्रेसिडेंट को यस और नो यू नो माननीय मुख्यमंत्री को तत्वावधान रे गोटे मीटिंग हेइथिला एटा पास करा गला कहंती ना नहीं ना एजुकेशन मिनिस्टर सीधा आसीबे एथरो नीट पेपर रो एग्जाम जहां हबो से कंप्यूटर बेस्ड हबो सेमिति कहिबेनी से कहिबे आमे माननीय प्रधानमंत्री तत्वावधान रे गोटे बैठक हैला सेथिरे निष्पत्ति करा गला कि आगामी दिन में जो नीट परीक्षा हेबा को जाउची तबे सेथिरे पिले स्वच्छता रक्षा करिबा पई आ एई परि परिस्थिति को ऑलराइट द्वितीय बार सामना न करिबा पई कंप्यूटर बेस्ड माध्यम रे परीक्षाटी करा जिवो बस ताहा विवृत्ति देले तेणु से जहाँ भी कहतु से निजे पिले निजर विषय वस्तु न कही प्रधानमंत्री को नहीं आसिले थिंक एंड दैट इज द रीजन एडजेक्टिव आल्सो when he think I am in a sentence then he has to go with a noun okay pile you know shirt तबे ए shirt आमे कहिले कोन बुझिले किछ नै if I say white shirt then आमे औरी टिके बुझिले सर आपण जो shirt कथा कहउछन्ते ना तार रंग होइछि धळा what is this white is adjective this is the reason fine okay and that's why if you say book only what is that book I don't know but before that book if I say a story book then what do you think sir we are understand much more about it rather book yes or no do you get my point and that is the reason why we always trying to like welcome adjective okay but when adjective will come at that time his younger brother you know article also come as he was agree when adjective says something yes or no as they belongs to in one house not subject and not verb
and that is why if I write white before that shirt, but again if I write a a, what you pronounce, all right sir, a white shirt, then it auri हमको information देला कि आपण गोटी white shirt विषय रे कहउछंती, yes or no पिले। तेणु ए रो परिचय कौन, से ए रो परिचय ही आर्टिकल। तेणु एडजेक्टिव जेतेबेले आसीबो, एथिरे हमें प्रश्न पचारिबा सर एडजेक्टिव केतेबेले आसीबो, जेतेबेले नाउन आसीबो, जेमिति एजुकेशन मिनिस्टर प्रधानमंत्री को नै कि कथा कहिले हना नै। तेणु नाउन को विषय वस्तु को बुझेबा पय एडजेक्टिव आसीबो एज ए कैबिनेट मिनिस्टर। देन से कैबिनेट मिनिस्टर अंकर एक्स्ट्रा डिटेल्स परिचय, इज ही बिकम और इज ही बिकम दो। काली मु कहिथिली अ ट्रेन एंड द ट्रेन, yes or no, and that make a vast difference, all right, and that difference that we are learning here is simple logic, not English grammar, okay, and that is why I have written a, okay, and in this sentence if I write Hari read a storybook, then think सर एते सहज सेंटेंस तीनटी शब्द रे तार टोटल विषय वस्तु को बुझी पारिबा कथा, किंतु सेथिरे अ स्टोरी भी आसिला, तबे सेही छोटिया सेंटेंस विराट काय सेंटेंस रो रूप नेला। तनो एहा तो हमें चिंता करू जे हमें किपरि अनर्गल इंग्लिश कहबो, हना नै, यस नो पिले। हरि रीड बुक, तीनटा वर्ड सामना को आसिला, जेते बेले हरि बही पढिबा कथाटी मु जाउ जण को कहिबी बा लेखि कि मु जणैबी, बट क्यों प्रकार बुक ताकू भी जदि मु कहिबी, देन दैट सेंटेंस बिकम हाउ सिंपल एंड हाउ वीक, यस और नो। तेणु वर्तमान आमे कोन देखिले, हरि रीड अ स्टोरी बुक, ओके पिले एई सेंटेंस पर हमें क्लास 2 को रखियो, फाइन, डोंट वरी, ओके ठीक अछि। तबे आमे याकू लिखिबा पिले, हरि रीड अ स्टोरी बुक, yes or no। तबे एई सेंटेंस कंप्लीट हेछि कि ना, तुमे कहिबो सर आपण कोन कहिबा पई चाहउचंती, yes or no। काहे कंप्लीट हेई पारिनी, कारण ही ताहा पिले सब्जेक्ट और वर्ब ए माने गोटिए घरर नहंती, हाना नै। जो एग्रीमेंट करिसेंती से एग्रीमेंट ऊपर गले ही सब्जेक्ट भी कहबो yes I am present in that sentence, verb भी कहबो yes I am present in this sentence, and finally they become a separate part but they make sense if both are agree। तेणु भंगाकार और कार, सॉरी भंगाकार और कार पिले सेथिरे जो पार्ट्स डिफेक्ट अछि, दैट्स व्हाई से चली पारुनी। सेही परी ए सेंटेंस रो सेंस एबे पंत आसिनी, जेहेतु नाउन और वर्ब रो एग्रीमेंट ऊपर से माने एबे पंत डिटेल्स देई नहांती, ओके। तेणु से जहां भी हो नेट रो इशू अछि, लैगिंग होउछि, फाइन, ओके ताको हमें देखिबा। सो हमें ऑब्जेक्ट पिले देखो, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब्स, ये ऑब्जेक्ट। तेणु ए ऑब्जेक्ट इफ आई आस्क व्हाट इज स्टोरी, यस और नो पिले, आना नहीं, राधुआ कोन पिले, सॉरी मिछुआ राधुआ रो गप, यस, ओके, किंबा आर्किमेडिस गरो यूरेका यूरेका परि शब्द, ओके पिले बाउवेंसी फोर्स बोली कहा जाउछे, साइंस रे पढिबा नॉट पढिबो, ओके ठीक अछि। तेणु से माने सही देखो बिले ताहा होछि पंचतंत्र हैला, माने नहीं स्टोरी तो मु कहिली, स्टोरी बुक तो मु कहिली, पंचतंत्र यदि मु स्टोरी बुक बोली कहिबी, देन दैट बिकम और मोर स्पेसिफिसिटी, सॉरी मोर स्पेसिफिक, and what we trying to understand, what we trying to like express our thoughts, sir से जो तीनटा वर्ड फर्स्ट आसिला, से तीनटा वर्ड रो ही डिटेल्स हम देबा पई चाहू छे, and that's the description here, got it। initially I just say book, but right now okay I'm saying a story book, then why a and story comes here, only to define the book, fine, only to identify that book, and that's the reason why we were first make the simple house, after that the modernized house. In between these two houses, in which house required more description or more detail, and in which house, okay, why not required much more description or much more details, much more component, okay। तेणु मु कहली सुनो, सुनिले पिले डिटेल्स कौन सफल आलोचना हेई परिबो,
नहले सब मुंडरू ही बाहर ओके बाउंस हो बाउंसी फोर्स बाउंस यू नो आर्कमेडिस से समान सिचुएशन तुमको पूरे भी काम करिवो फाइन तेणु वर्तमान हरी आउ रीड तुम्हें जानिछ ना जेते बेले मु सिंगुलर हेवी वर्ब तुम्हें मध्य कौन हबो सिंगुलर हबो ताहा तो फर्स्ट चुक्ति नामा व्हाट वी नो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ओके तेणु जेते बेले नाउन सिंगुलर हुए तबे वर्ब भी सिंगुलर हुए जेहेतु सर मु सिंपल सेंटेंस रो पाठ पढुची सो आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट कि सर द डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ब मो पाखरे गोटिए रूल अछि देखो पिले फ्लिप रूल व्हाट फ्लिप रूल ओके सी सो तुम जानिछ अरे नहीं पिले एपटे पांचटी कोन अछंती कैट अछंती एपटे एस अछि तबे जेते बेले पांचटी सॉरी कैट जेते बेले ए जो कोन अछि लेफ्ट साइड और राइट साइड ओके बसिले एस कोन हे जीवो कोन पिले ऊपर को उठिबो सी कम ओजनिया हैला तार आवश्यक नुह किंतु जदि गोटिए कैट अछि ऑलराइट होना नहीं अरे बुझियो कुछ चेष्टा करो आमे जानी जे तबे गोटिए कैट अछि पिले तबे सही समय रे एस ओजनिया हबो कैट ऊपर को उठिबो तेणु एथिरे जणे अछि तबे जणे थिला बेले एस जीति जाए पिले जे तळको होती से जीतंती ना तमे जानिचो ए खेल सी सब ठीक तेणु याको आमे फ्लिप रूल बोली कहिले यदि कैट तळको गले एस हारिला फाइन बा एस आसे कैट पाखरे रहिला जदि गोटिए कैट हेले पिले एस जीतिला कैट जाई ता पाखको गला बा एस पाखको गला एणु जदि जणे अछि तबे वर्ब मध्य कोन हबो एस नै कि जीवो तेणु ए रीड अछि से रीड्स हबो ओके डू यू गेट इट माय पॉइंट फाइन तेणु हरी एथिरे रीड न हे पिले रीड्स हैला आफ्टर दैट अ स्टोरी बुक या अ बुक व्हाट वी कैन से दैट ऑल आर राइट हरी रीड्स अ स्टोरी बुक नाउ आमे एग्रीमेंट को गला पर ही से माने बुझिले वर्तमान यस वी आर फाइन ओके यस और नो तेणु एथिरे हरी हरी मध्य सैटिस्फाई अछि रीड वर्ब मध्य सैटिस्फाई अछि सब्जेक्ट वर्ब सैटिस्फाई अछंती एंड दैट्स व्हाई this sentence become or this sentence or this group of word now make sense and that's the ultimate goal you know what is sentence if anyone will ask then we are saying a group of word which mix to form sense and then they are called the sentence तेणु मैं देखो पिले सेंस ऊपर कथा रहिला से सेंस बा यथार्थ हना नहीं एबे आसिला तेणु ए फ्लिप रूल प्रथमे आमे देखिले ओके तेणु हरि रीड्स हैला किंतु हरि राम श्याम राधुआ हृदा यदि एमाने समस्ते हेले एस पिले आ ओजनिया हबनी एस ऑटोमेटिक एमानको पाखको आसीबो नाउन सह एग्री हेई जीवो व्हाट यू से नाउन आई विल एग्री किंतु पांच जनक बदल जदि जणे हरि आसे तबे वर्ब कहे आई विल नॉट एग्री विथ यू you have to obey my rule and in that cases when subject becomes singular verb also becomes singular but when that verb becomes singular if it contain or if it carry s at the end and that's read become reads all right and this is the simple one that's why Hari reads a story book finally they make sense but where it was started the three word itself that from here Hari book read got it my point ओके बहुत बहुत धन्यवाद टी अधिक टाइम भी गला मु बुझी पारुछि किंतु पिले या परे जो क्लास आसीबो दैट आल्सो मेक लाइक वैल्यूएबल काहे कि ना तुमे 50% विषय वस्तु बा इंग्लिश पढिबा पई इंग्लिश सेंटेंस को बुझिबा पई सक्षम हेई गलो ओके तो और जो 50% रिक्वायरमेंट अछि दैट आल्सो ग्रेजुअली वी विल ट्राई टू कवर बट प्लीज डोंट मिस द क्लास इन फ्राइडे एंड सैटरडे ओके फाइन तुमे तुमरो स्कूल बही रे भी अच्छा अच्छा पिला माने चिंता रे थिबे सर मो स्कूल बही रे जो प्रश्न आसुची से तो मते चिंता रे पकोउची तबे से स्कूल रो प्रश्न मु केमिति समाधान करिवि सेम थिंग हरी डैश कोन बुक आसिला तबे ब्रैकेट रे थिबो रीड ब्रैकेट रे थिबो रीड्स ब्रैकेट रे थिबो रीडिंग हना नहीं यस नो प्ले तीनटा कोन अछि एमिति तो प्रश्न आसे ना स्कूल परीक्षा रे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे भी तेणु रीड हबो ना रीड्स हबो ना रीडिंग हबो सिंपल थिंग हरी अछि माने रीड्स हबो
ओके अच्छा पिले ठीक अच्छे डोंट वेरी रीडिंग को आम भूली जावा ना आम अधिक कन्फ्यूज होगा तेणु रीडिंग को आम ए ऑप्शन नेबानी दुईटी ऑप्शन उपर काम करवा आम पाखे से ज्ञान है तेणु अधिक ऑप्शन नेबानी ओके तेणु 50% जो ज्ञान रही है ना आम ये समान सेंटेंस को लेकिन आसवा कहीं रीडिंग है से विषय भी कथा है पुणी कहीं रीड सारानी से विषय भी कथा है अभी तो पिक्चर बाकी है ना अरबी है फाइन तेणु ए रीड हम ना रीड्स हम रीड्स है बस से कथा पिले सी हाउ दिस like sentence or how this question become more easy without reading a single word from the grammar हाँ ना नहीं तेणु ग्रामर आम पढ़ुचे बट अन्य ओर उपर आम बुझे चेष्टा करुचे फाइन बहुत बहुत धन्यवाद यदि तुम क्लास भल लगे तब सेशन को लाइक कर सांगसाथी मान इनफॉर्म कर at the end moment okay I can see from my end there is something the net issue okay the video is lagging right now fine okay no need to worry just try to join in our telegram and WhatsApp channel so that we will also discuss some what remain things okay पहले एथिरे केवल डिस्कस हुए से मीटिंग हुए तेणु मीटिंग रे अटेंड करबा बहुत बहुत इंपोर्टेंट थाए कहीं कि ना मैं जानिछ जहाँ प्रस्ताव है कि आसे ताको मीटिंग माध्यम रे ही समाधान करा जाय तेणु धर्मेंद्र सार मध्य नरेंद्र मोदी आवश्यकता लड़िले तापर से कहले कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा हबो ना नहीं समान विषय वस्तु समान सिचुएशन बस भावना भिन्न आमे नुह कैबिनेट मिनिस्टर वी आर जस्ट अ स्टूडेंट राइट नाउ दैट्स व्हाई हाउ सर टॉक्स टू पीपल we also talks to our friend our people okay like this fine okay thank you